In question, the cash book and bank statement is given in the question. The step 1, compare cash book debit side with bank statement credit side, and compare cash book credit side with bank statement debit side. The cash book debit will compare bank statement credit, that is deposit, and cash book credit will be compared with bank statement debit side. In step 2, you have to prepare recash book or update cash book. It is prepared at that time when the items are missing in the cash book, but they are exist in the bank statement. We just only put it on down only missing figures. तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस यहाँ पे देखिएगा, विच बैलेंस विल कम, बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पे कौन किधर गिवन है, क्रेडिट पे गिवन है, तो रीकैश बुक कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड पे आएगा. और बैंक्स अगर कैश बुक में बैंक बैलेंस कैरी डाउन डेबिट भी गिवन है, दैट विल कम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक. And here, write down balance brought down. Only one side will come on the balance brought down. Both side will not come. Only one side. Then after that, you write down missing figure. On debit side, those items that are in the bank statement credit side, they are exist in the bank statement credit side, but they are missing in the cash book debit side. So write down those missing figures on the debit side. And second thing is that you have to write down all missing figure that will come on the bank statement debit side, and they are forgotten or missing in the cash book credit side. And after that, you have to down balance carry down and balance carry down. Only one balance carry down will come. Step 3. In step 3, you have to prepare the bank reconciliation statement. This is prepared at that time when the items are missing in the bank statement, but they are in the cash book. Remember that there is only two checks, uncredited checks and unpresented checks. Uncredited check will become on the cash book debit side, and unpresenting check will come on the cash book credit side. These are given the question. कैश बुक में गिवन होगा, आपने क्या करना, स्टार्ट करना है BRS बैलेंस एज पर कैश बुक, आइदर डेबिट और क्रेडिट. अब यहाँ पे आपके पास जो री कैश बुक का बैलेंस है वो आएगा. देखिए यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन जो है क्लोजिंग बैलेंस, ये क्रेडिट पे है तो ब्रॉड कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड पे. और कैश बुक का अगर डेबिट पे है तो बैंक, और ये BRS में आएगा क्रेडिट साइड पे. आज याद रखिएगा ये रूल है कि अनप्रेजेंटेड चेक्स डेबिट बैलेंस में क्या होते हैं, ऐड, और क्रेडिट बैलेंस में क्या होते हैं, माइनस. एंड अनक्रेडिटेड चेक्स सब्ट्रैक्ट होते हैं डेबिट बैलेंस में और प्लस होते हैं क्रेडिट बैलेंस में. नीचे वाला जो क्लोज आंसर आएगा, दैट आंसर विल बी बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, आइदर डेबिट और क्रेडिट. तो आपको एट द स्पॉट पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है. ये फर्स्ट टॉपिक हो गया. आज हम दो टॉपिक रिवाइज करेंगे.